हाय गाइस, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, अराउंड 5 मिनट्स, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था। एंड सो फर्स्ट टाइम वी आर कंडक्टिंग मेंटी क्विज ऑन अ डीजी बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। सो थोड़ा सा अच्छे के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। सो यस, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, बिफोर वी स्टार्ट विथ द क्वेश्चन, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ना बहुत सारे बच्चे दे आर नॉट वेल वर्स विद द मेंटी मीटर। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, तो फर्स्ट लाइन यही लिखी होगी, टू ज्वाइन द मेंटी क्विज क्लिक ऑन द लिंक और पेस्ट द कोड। सो अगर आपको कोड पेस्ट करना है, डायरेक्टली कोड पेस्ट करो, यू विल गेट एंटर इनटू अ मेंटी क्विज। आप यहाँ पर ऐसा शो करने लगोगे, है ना। एंड फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, लिंक पे क्लिक करो, आपको थोड़ी आईडी बनानी पड़ेगी। एक पेज होगा जिसमें टू रजिस्टर योर नेम, यू हैव टू एंटर योर फोन नंबर, और आप एंटर कर जाओगे, ठीक है। सो दो स्टूडेंट्स नॉट वेल वर्स्ड विद द मेंटीमीटर, उनके लिए ये था, ठीक है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर हो गई है, कोड भी पेस्ट कर दिया है। सो यस, विल वेट फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स। थोड़े से और बच्चे ज्वाइन हो जाने दो, उसके बाद फिर अपन मेंटीमीटर को मैं या मेंटी को इसको स्टार्ट करेंगे। विल वेट फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स, ओके। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, सो जो लोग फर्स्ट टाइम मेंटीमीटर स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू पेस्ट द कोड, यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, तब जाके आप मेंटीमीटर कर पाओगे। एंड वन मोर important point is you need two devices for this quiz. One is for the YouTube live and another one is for the uh, menti quiz, जहाँ mentimeter, जहाँ पर आप questions दिखेंगे। So 1 minute more and then we'll start with the session. We'll wait for 1 minute more. Good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening, Pihu. Good evening, Manthan. Good evening, everyone. 30 seconds more. We'll wait for 30 seconds more and then we'll start with the session. Then we'll see कि आज के मेंटीमीटर में कौन टॉप 10 में रहता है। चलो, so let's start with the session and let's see कि आज के क्विज में what the first question says. So if you want more points, you have to mark the correct answer. उसके साथ साथ you have to give the right answer in a very minimum period of time. Okay. So yeah, Sukhvinder Singh Sukhu was sworn in as the chief minister of its state. Recently, एक पर्सन है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो अभी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने। विच स्टेट? इट्स हिमाचल। वेरी इजी वन। सो हिमाचल प्रदेश की करेक्ट आंसर। एंड हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी विद मेजोरिटी जीत गई। बट अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अराइज हो रही थी कांग्रेस पार्टी में कि कौन सा पर्सन चीफ मिनिस्टर होगा। सो देयर इज अ क्लैश बिटवीन प्रतिभा सिंह एंड सुखविंदर सिंह सुक्खू। फाइनली कांग्रेस की हाईकमान ने डिसाइड किया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन, let's move on to the question number two and let's see what question number two says. Okay, which is the first state to launch its dedicated climate change mission? कौन सा फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जो पूरे तरीके से डेडिकेटेड है फॉर द क्लाइमेट चेंज मिशन के लिए? विच स्टेट? आई थिंक इट्स अगेन वेरी इजी। नो, इट्स तमिलनाडु। सो रिसेंटली तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन, जो कि डीएम के पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि तमिलनाडु जो रहेगा वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा फॉर द क्लाइमेट चेंज मिशन को लेकर।
एंड आगे चलकर जो भी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, दैट प्रोजेक्ट समवॉट बेस्ड ऑन आपके एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसके थ्रू इंडिया जो है जीरो कार्बन इमिशन अचीव करेगा बाय द एंड ऑफ 2024 or 2070, not 2024, 2070. Let's move to the next question. Question number 3. Be quick if you want to get more points. Which country has announced the historic nuclear fusion breakthrough? किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि मतलब किस कंट्री में रिसेंटली न्यूक्लियर फिजन में ब्रेक थ्रू मिला? इट्स यूएसए. ओके, सो यूएसए इज अ नेशन जहां पर अभी रिसेंटली ही न्यूक्लियर फिजन को लेकर ब्रेक थ्रू मिला. अब ना एक हमारे दिमाग में हमेशा से क्वेश्चन अराइज रहा कि व्हाट इज फ्यूजन एंड व्हाट इज फिजन. ठीक है, देखो फ्यूजन का मतलब ये है कि आप एटम को तोड़कर एनर्जी क्रिएट करते हो. क्योंकि कोई भी किसी भी चीज, इफ अगर मैंने क्लैपिंग भी करी, सो दिस क्लैपिंग नीड सम एनर्जी, इससे कुछ एनर्जी क्रिएट हुई होगी. एंड हमेशा हमने बचपन से पढ़ा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. ठीक है, सो अगर ये एनर्जी क्रिएट हुई, सो इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. सो इसलिए कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी करते हो उससे एनर्जी क्रिएट होती है, बट ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इसलिए जो फ्यूजन होता है, इट मींस एक एटम को तोड़कर अगर आप जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, दैट्स फ्यूजन. और अभी हम लोग यही कर रहे हैं, फ्यूजन पे ही है कि एटम को तोड़कर एनर्जी क्रिएट होती है. एक होता है फिजन, आप जोड़कर एनर्जी बनाते हो. ठीक है, सो फ्यूजन, अगर जो हम एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन से होती है. एंड वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज अगर आप 100 किलोवाट ऑफ एनर्जी आपको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बनाने, एनर्जी कितना क्रिएट कर रही है, मान के चलते हैं 100 एमपीओस ऑफ एनर्जी आ रही है, और लेकिन इसको बनाने के लिए कम से कम 200 एमपीओस ऑफ एनर्जी गई होगी. ठीक है, इसलिए फ्यूजन बहुत ज्यादा खराब होता है. बट फिजन अभी इंडिया में भी ब्रेक थ्रू मिला है फिजन को लेकर. ये न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर है, फिजन को लेकर ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें जोड़कर, तो जोड़ने से अगर एनर्जी क्रिएट होती है तो फिर सब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री मिलेगी. क्योंकि जोड़कर अगर हम 100 एमपीओस ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस करेगा 140 या 130 एमपीओस ऑफ एनर्जी, जो 30 एक्सीड कर रही है. तो जिससे अगर फ्यूजन से हम लोग एनर्जी बनाने लगे, तो फिर क्या होगा? फ्यूजन से अगर एनर्जी बनाने लगे तो क्या होगा? विल गेट व्हाट? फ्री इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Who is the head of the Supreme Court Collegium, which recently sent its first set of recommendations? Again, pretty easy. So, who is the head of Supreme Court Collegium जिसने अभी फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन भेजा? बहुत इजी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो. Yes, so majority, so all the students has given the correct answer, which is DY Chandrachud. So DY Chandrachud Collegium की अगर हम बात करें, comprises of what comprises of 5 members, जिसमें CGI जो है और अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं. तो इसलिए CGI ने ही रिकमेंडेशन भेजी होगी. ओके, सो करेक्ट आंसर इज DY Chandrachud. Moving towards the next question. Question number 5th. And let's see what question number 5th says. Which state recently passed a bill to remove governor as chancellor of states universities? किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बिल पास कर दिया है जिससे गवर्नर को स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो चांसलर था वो हट जाएंगे, उस पोजीशन से हट जाएंगे? प्रीटी इजी. इट्स केरला. सो केरला कैबिनेट ने और इवन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास हो गया है. एंड अकॉर्डिंग टू द बिल, अगर ये गवर्नर असेंट देता है, देन गवर्नर विल नो मोर बी द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज. ओके, मूविंग फर्दर towards the next question. So before we move on to the next question, let's see after the 25% of the quiz completion,
कौन कौन टॉप 100 में है. So yes, so Anjali is on the first position and she's the fastest one also. And उसके साथ साथ अंजलि ने पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर दी करेक्ट दिए हैं. Then second one goes to Isha, then Suryansh, then Mahek, Anirudh, Pallavi, Soumya, Manthan, Srishti, and Bhavya is on 10th position. So let's move on to the question number 6 and let's see what 6 says. Which institution launched the International Climate Club? अभी रिसेंटली किसी इंस्टीट्यूशन ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया. विच इंस्टीट्यूशन? G20, G7, ASEAN or Shark? The correct answer is it's G7. Okay, so group of 7 nation उन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का लॉन्च किया. एंड इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? G7 नेशंस याद रखने हैं कि G7 नेशंस कौन कौन से हैं. ठीक है, बहुत इजी है. एशिया से एक ही कंट्री है, दैट इज जापान. नॉर्थ अमेरिका से देयर आर 2 कंट्रीज, वन इज कनाडा, अनदर वन इज यूएसए. देन यूरोप से रिमेनिंग 4 कंट्रीज, and the remaining 4 countries are what? France, England, Germany, Italy. Okay, so let's move on to the question number. Next question. Question number 7. And let's see what 7 says. Ministry of Agriculture partnered with which department to develop a Krishi Decision Support System, also known as Krishi DSS? The correct answer is Department of Space. Okay, so recently Department of Space ने partnered किया है Agriculture Ministry के साथ, जिसके चलते वो लोग कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करेंगे. Okay, so let's move on to the next question. Question number 8, and let's see what question number 8 says. Which Indian initiative has been recognized by the Conference of Party, also known as COP15, to the Convention on Biodiversity? कौन सा इंडियन इनिशिएटिव है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया COP15 में? COP15 और व्हाट? CBD, कन्वेंशन ऑन डाइवर्सिटी को लेकर. द करेक्ट आंसर इज नमामि गंगे. ओके, सो नमामि गंगे इज इंडिया इनिशिएटिव जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है COP15 में. Let's move on to the next question. Question number 9, and let's see what 9 says. What is the new name of Pradhan Mantri Kaushal ko Kaam कार्यक्रम? नया नाम क्या निकला? पहले जो नाम था स्कीम का वो ये था, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, बट इसको चेंज करके एक डिफरेंट नेम रखा गया है एंड दैट इज पीएम विकास. ओके, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन. Okay, so PM Vikas is the correct answer, and PM Vikas has replaced the name of scheme, that is Pradhan Mantri Kaushal Ko Kaam Karyakram. Let's move on to the next question, question number 10th, and let's see what 10th says. Surya Kiran is a joint training exercise conducted between India and which country? So recently सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और एक नेशन के बीच में कंडक्ट होती है. Who are these nation? Sorry, who is this another nation? India and सिंपल है, it's Nepal. So Nepal and India के बीच में जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, that is name of the training exercise is what? सूर्य किरण. Let's move on to the leaderboard and let's see after the completion of 50% of the questions, after the 50% of the quiz, कौन top 10 में? Yeah, so Anjali again, she is the fastest one and she has given all the 10 question correct.
So Anjali, congratulations, good. Second position goes to Bhavya, then Manthan, then Srashti, then Anirudh, Pallavi, Suryansh, then Soumya is on eighth one, Isha is on ninth, and Mehak is on 10th. So परेशान मत हो, अभी भी ना 50% क्विज बाकी है. So focus on that. So let's move on to the next question. Wait for a second, guys. Okay, so just okay. So let's move on to the question number 11, and let's see what 11 says. Be quick. Which institution adopted a plan for a global minimum 15% tax on multinational businesses? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने जिस ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट किया है अ प्लान फॉर अ कि 15% टैक्स लगाया जाएगा ऑन द इंटरनेशनल बिजनेसेस के ऊपर? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रीटी इजी. इट्स अगेन G7. तो G7 अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसलिए G7 इज द करेक्ट आंसर. और खुद सोचो, अगर 50% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है तो जो डेवलप्ड नेशन है वही लगा पाएंगे. और डेवलप्ड नेशन कौन 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 से होते हैं? G7. सो करेक्ट आंसर इज G7 नेशंस. ओके, let's move to the question number 12, and let's see what 12 says. When is the International Migrants Day celebrated every year? International Migrants Day कब होता है? December 15th, December 18th, December 21, or December 23? On which date? It's 18th of December. So 18th of December has been celebrated as International Migrants Day. Okay, so ये याद रखना, बहुत important है. So let's move on to the question number 13th, and let's see what 13 says. Which nation banned the buying of cigarette by anybody born on and after 1st January 2009? So recently अभी एक नेशन है जहां पर ये लॉ निकल चुका है कि जो भी पर्सन बॉर्न हुआ है 1 दिसंबर 2009 के बाद वो स्मोक नहीं कर सकता, उसकी स्मोकिंग पे बैन है. एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Number 14th. CGI inaugurated digitalization hubs in 10 districts of its state. So recently जो हमारे CGI है डी बाय चंद्रचूड, उन्होंने ना रिसेंटली अभी एक स्टेट के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटलाइजेशन हब को इनॉग्रेट किया. विच स्टेट? इट्स ओडिशा. सो ओडिशा इज द स्टेट जहां पर हमारे जो रिसेंटली अपॉइंटेड सीजीआई जो है डी बाय चंद्रचूड, उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटलाइजेशन हब्स को बनाया है, इनॉग्रेट किया है, नॉट बनाया है. क्वेश्चन नंबर 15. Recently, which country launched the world's first private moon lander? ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी वर्ल्ड का पहला प्राइवेट मून लैंडर जो है वो लॉन्च किया है? जापान, चाइना, इंडोनेशिया और कनाडा? Okay, so it's Japan. Japan is the correct answer. So Japan
इज अ नेशन जहां पर वर्ल्ड का पहला प्राइवेट मून लैंडर जो है वो लॉन्च किया गया. ओके, सो लेट्स सी दी लेडर बोर्ड एंड लेट्स सी कि लेडर बोर्ड में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं. ओके, आई थिंक शायद कुछ चेंजेस हो. या सो यस, सो अंजलि तो अपनी पोजीशन मेंटेन करके बैठी हुई है. सो अंजलि को कोई खतरा नहीं है. सेकंड पोजीशन गोज टू सौम्या, देन अनिरुद्ध. फोर्थ वन इज भाव्या, देन पल्लवी, अंजलि, मंथन, Swayash. Srishti is on ninth, and 10th position goes to Rajbir. Okay, so let's move on to the next question, question number 16th, and let's see what 16 says. Which city makes solar panels mandatory for new homes built after 2025? किस सिटी ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर जो भी अ, घर बनवाएगा 2025 के बाद उसको सोलर पैनल लगाना जरूरी है? The correct answer is Tokyo. So Tokyo become a city, first city in the world जहां पर mandate कर दिया है कि if you make new homes after 2025, you have to install the solar panels. Let's move on to the question number 17th, and let's see what 17 says. Suspected whose tragedy claimed 21 lives in which state? अभी रिसेंटली एक हुज ट्रेजेडी हुई है. हुज ट्रेजेडी का मतलब ये है कि पॉइजनस अल्कोहल. Yeah, so the correct answer is what? Bihar. Okay, so बिहार में रिसेंटली हुज ट्रेजेडी हुई. क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, बट अभी तक शायद 30 लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, and let's see what 18 says. Which state set up a panel to look into providing internal quota for scheduled caste? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और कर्नाटका. बहुत इजी है, डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में. डिस्कस किया था इसको, और डिस्कस सभी को किया था एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, बट ये था. या इट्स कर्नाटका. सो कर्नाटका बिकम स्टेट रिसेंटली जहां पर एक पैनल बनाई गई है जहां पर शेड्यूल कास्ट के इंटरनल कोटा को देखा जाएगा. ठीक है, इंटरनल कोटा शेड्यूल कास्ट के अंदर, इंटरनल कोटा शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के अंदर देना है कि नहीं देना है, उसके लिए पैनल फॉर्म की गई है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. Question number 19, and let's see what 19 says. Which state has become the first state to launch climate change mission? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जो कि क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च कर रहा है? मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड और मिजोरम. विच स्टेट? या तो तमिलनाडु अगेन रिपीटेटिव वन वाला है. सो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. सो तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो कि क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 20th, and let's see what 20th says. The first, the purple fast for people with disabilities to be held in which state?
purple fast for the people with disabilities to be held in which state? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और उड़ीसा। कहाँ पर सबसे ज्यादा सिविलाइज रहते हैं? इजी है। या इट्स नॉट गुजरात, इट्स गोवा। सो गोवा बिकम दी स्टेट जहाँ पर पर्पल फास्ट किया जा रहा है बाय द पीपल ऑफ गोवा, जिससे डिसेबल्ड लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिले उनके एक दिन ना खाना खाने से। ओके, सो गोवा इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड, लेट्स सी द फाइनल लीडर बोर्ड। ये कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है? आई थिंक कुछ चेंजेस शायद नहीं। सो अंजलि, again, she topped the quiz, topped the session, given, I think she has given around 18 to 19 question correct. Soumya is on the second one. Soyanj, जो कि fastest थे अभी तक के last 5 questions में, is on third position. Then Manthan, Anirudh, then I'll naam chuk gaya hai. Then Bhavya, Pallavi, Rajbir, and Srishti is on 10th position. Okay, so these are the top 10 students. But ये top 10 ना आपको बहुत लग रहा हो टॉप खुश मत हुई है, अभी कंपटीशन काम है। रीजन बीइंग अभी बहुत सारे लोग अभी नींद खुली नहीं उनकी। दे विल इनटू अ प्रिपरेशन बट यू हैव द एज कि आपने पहले स्टार्ट कर दी। सो यस, सो थोड़ी देर और रही है, बच्चे बढ़ेंगे, फिर कंपटीशन करने मजा आएगा। So on that note, again, I'm telling you, if you want to experience the importance of these types of quizzes, एलिट में बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया था इस बार के एग्जामिनेशन में, एलिट जो हुआ था। एंड इवन फॉर क्लैट ऑल्सो, अगर आप टॉपिक को लिखते जाओ, सो जैसे कि तमिलनाडु में रिसेंटली क्लाइमेट चेंज मिशन को अभी अडॉप्ट कर लिया, सो यू शुड नो कि भाई क्लाइमेट चेंज मिशन क्या है, क्या चीज बोलता है। ओके, सो ऑन दैट नोट, अभी किसी का एक डाउट है संस्कार का, सर व्हेन इज द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस गोना स्टार्ट फॉर क्लैट 24? एस्पिरेंट संस्कार, न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस चल रहा है। हाँ, 2 दिन ब्रेक आया था ऑन सैटरडे एंड मंडे, रीजन बीइंग क्लैट का एग्जामिनेशन था, तो बहुत ज्यादा हम लोग बिजी थे। सो यस, लेकिन अब रेगुलरली चलेगा, इवन ऑन संडेज आपको मिलेगा। हो सकता है डीजी बोर्ड पे ना मिले संडे के दिन या किसी छुट्टी के दिन, क्योंकि घर से लेना पड़ेगा, सो विदाउट माई फेस आपको मिले। बट हाँ, अभी आपको डेली मिलने वाला है, डेली मिलेगा, ठीक है। चलो, ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस सेशन, एंड हम लोग फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एंड इवन हम लोग कल फिर मिलेंगे विद डेली एनालिसिस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।